Hello friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video. This video is about one of the latest cue card that the examiner can ask you. So let's quickly check out what the cue card is and what the cues can be, and then we will discuss the idea behind the cue card and the sample answer. Talk about a song or a poem about history of your country. As you know that I'll always ask a cue card related to music, a song, your favorite song, a song you heard lately, a music concert you attended, your favorite song, things like that. And now it is going to be changed, and now they are going to ask you a song that reflects the history of your country, or it has something to do or tells about the history or culture of your country. So as you know that I'm going to share the idea behind this cue card now in the regional language Hindi, and after that I will share the sample answer in English with you. Guys, we all know that India has a rich history and culture, और अक्सर इसको डिपेक्ट करने के लिए म्यूज़िक की हेल्प ली जाती है, और बहुत सारे सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ने हिस्ट्री को म्यूज़िक के द्वारा रिप्रेजेंट किया है. एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जिसमें हमें इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसकी जोग्राफी के बारे में लर्न करने को मिलता है. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट सच सॉन्ग, एंड आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर देन द नेशनल एंथम इटसेल्फ. ये एक अमेजिंग सॉन्ग है और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा. लिखा किसने है, अगर नहीं भी पता यार कोई ज़रूरी नहीं है. वैसे तो हम नेशनल एंथम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता भी होना चाहिए, बट स्टिल जितना ज़्यादा आप नेचुरल सी बातें करेंगे उतना अच्छा लगेगा, रादर दैन बीइंग फैक्चुअल कि इतनी डेट को इस दिन पे लिखा गया, इस दिन पे पहली बार गाया गया, ये वो. इन चीज़ों को बेटर ही होता है कि क्यू कार्ड्स में अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा. जस्ट ये देखा जा रहा है कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाते हैं या नहीं पाते. वेल, नेशनल एंथम के बारे में बोलने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है. हम द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता सकते हैं, जो बंगाली थे जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा है. ओरिजिनली ये बंगाली में था, या हम कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में है, डजंट मैटर. इनफैक्ट ये बहुत सारी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ है इंडिया की, लेकिन हम कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदी में मैंने सुना, या अपने स्कूल डेज से ये मैं सुनता आ रहा हूँ. तकरीबन हर स्कूल में एक रिचुअल होता है, आपके स्कूल में भी होगा, मेरे में भी था, कि मॉर्निंग असेंबली में एक बार नेशनल एंथम ज़रूर गाते हैं. दिस वे एक तो बच्चों को नेशनल एंथम याद हो जाती है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, नेशनल एंथम एक बच्चों के अंदर यूनिटी को और पैट्रियोटिक इमोशन को प्रमोट करता है. तो यहाँ पर हम इसकी लिरिक्स की बात करेंगे, जिसमें हमें यहाँ के ग्रेट किंग्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, यहाँ की ग्रेट जोग्राफी के बारे में, अबाउट द हिमालयाज या डिफरेंट रिवर्स. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एज अ कंट्री की हाईलाइट करता है. देन वी कैन टॉक अबाउट कि इसका म्यूज़िक जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग है. एंड बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स पर जो नेशनल एंथम है हमेशा गाते हैं, स्पेशली ऑन नेशनल डेज, या जब कोई भी मैच होते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, गेम स्टार्ट होने से पहले भी नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं. इट्स अ वे टू यूनाइट द पीपल ऑफ माई कंट्री, क्योंकि यही एक सॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन ये नेशनल एंथम है, सबको एक होने का मौका देता है. एंड अनडाउटेडली ये जो सॉन्ग है आपको बहुत मोटिवेट करता है, और ये आपके अंदर की जो पैट्रियोटिक इमोशंस हैं उनको भी इवोक करता है. सो इसके भी अलावा आपके माइंड में जो भी आए आप बोल सकते हैं, एंड जस्टिफाइज दैट इट इज़ द सॉन्ग दैट इज़ associated with your country's history and has a great significance for you. तो आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए. And just like other cue card, this cue card has also been uploaded on the IELTS speaking booster, and I highly recommend you to that purchase this book to practice for your IELTS exam, because most of the time you will see that the examiner has asked you the questions, no matter introductory or the cue card or the follow-ups from speaking booster only. Let's quickly check out the sample answer. Well, the history of a country can be learnt in so many different ways, but I always find learning through music the most fascinating. Here I would like to talk about a song that represents the history and culture of my country. It is none other
but the country's national anthem, and I heard it for the very first time when I was in first grade. Actually, it is more like a ritual in my country that in every school, national anthem is played during the morning assembly. It is a way to make children get familiar with country's history and promote unity at the same time. National anthem is in regional language Hindi and it is written by the famous poet Rabindranath Tagore and it describes the country India in a very aesthetic way. It talks about the famous rulers and kings of India and highlights the various features of the geography of India, especially the Himalayas, rivers, along with the cultural diversity. By reciting it over and over, I have learned it by heart. I must say, I particularly like the musical notes of the song, and every time I listen to it, it evokes my patriotic feelings. This one song unites the entire nation and make people of different religions, caste, creed feel united. That's the reason why it is always played on national days to bring the entire nation together. Similarly, during sports event also, it is played to boost the morale of the players and to release their national feelings. Overall, it is a wonderful song that is associated with the history of my country and is of great importance to every Indian. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world in less than 30 seconds? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download ClassPlus and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects an INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.